Hello everyone, I am Kartika and here we are again with another video of सौका शोडाउन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय विद्यापीठ पुणे के बारे में और हम सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि उस कॉलेज के रिव्यूज भी लेंगे अथर्व से जो ऑलरेडी उस कॉलेज के एक स्टूडेंट है। सो हाय अथर्व, Hi Karthika, how are you हाउ आर doing? यू डूइंग? आई एम गुड। I'm doing great. Yeah, ओके, सो अथर्व थोड़ा आपके बारे में बताएंगे। so my name is Sardar Pandey. I'm currently a student studying in Bharti Vidyapeeth Pune Pune. I'm ओके, currently ending with my fourth year, and I'm from Banaras in Gorakhpur basically. And I'm currently also pursuing student of C6 executive. So yeah, that's all. ओके। सो अथर्व, एज भारतीय विद्यापीठ बहुत पुराना कॉलेज है, सो उसके ऐसे Right. क्या मेन चीजें हैं, क्या हिस्ट्री रही है भारतीय विद्यापीठ पुणे की? So Bharti Vidyapeeth was established in 1978. हम्म। So तब से लेकर and it was inaugurated by then Chief Justice of India, who's father of the current Chief Justice of India, Mr. Y.V. Chandrachud. Back then, he inaugurated the college. So the college, the Bharati Vidyapeeth, and all the colleges associated with Bharati Vidyapeeth, including the New Law College Pune, has their own goodwill and has their name. And also, it's been such an old college. इतने सारे लोग यहाँ से पढ़कर निकले हैं, इतने सारे लोग राइट। यहाँ से graduate हुए हैं. So almost everyone is can be seen in almost in every field, in every law firms or in every many of them are were the judges, many of them were in different companies as well. So it's like they have a legacy in the name of Bharati Vidyapeeth. राइट। Yeah. सो एज भारतीय विद्यापीठ इतना पुराना कॉलेज है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? वो वही तभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ चेंजेस आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में? नो एक्चुअली तो जो एक मेन कैंपस है भारतीय हम्म। विद्यापीठ का पुणे में, वो उसका अपना एक उसका इट हैज अ ह्यूज कैंपस एंड हैज अ अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. एंड सिमिलरली जो हमारा कैंपस है विच इज लॉ कॉलेज का जो कैंपस है, हम्म। इट इज ऑल्सो इट हैज बीन मॉडिफाइड विद द टाइम, बिकॉज ओके। हमारे कॉलेज में लॉ कॉलेज के अलावा भी दो तीन कॉलेजेस और हैं. हम्म। जैसे कि फार्मा का कॉलेज है और कॉमर्स के कॉलेजेस है, आर्ट के कॉलेजेस है. तो आर्ट्स और फार्मा के कॉलेजेस बाद में बने हैं, कॉमर्स और लॉ के कॉलेजेस पहले से थे. ओके। So we have a huge campus and huge place to keep modifying everything. And उसी हिसाब से we have a great basketball court as well. So ओके। infrastructure wise is very good, and we have a huge building of for our law college. We have a huge white colored building, and it's actually gives you sometimes the the perception of that you're standing in front of a white house or something, ओके। because it's so huge and it's in white in color. So we have an amazing infrastructure anyway. Yeah. ओके। ओके। सो क्लासेस एंड ऑल स्मार्ट क्लासेस हैं या रेगुलर जो क्लासेस होती हैं वैसी हैं? Classes actually हमारे यहाँ hybrid form में चलती हैं. हम्म। So it can be like some we do have a smart classes की facilities as well. So हम्म। depending upon the requirement, teachers do take PPTs and all these stuff uh, in smart classes के view में, and we have a blackboard system also as well. ओके। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ही आर देयर एनी हॉस्टल फैसिलिटीज? Yes, we do have a boys hostel and a girls hostel, which हम्म। is in the campus itself, and it's just surrounded by trees, and so it's actually in a good place. Yeah. ओके। एंड हॉस्टल की फीस एंड ऑल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? Yeah. So since I joined in 2019, हम्म। so तब से लेकर hostel fees has been revised, but it is हम्म। somewhere around 1 lakh, 1 lakh to 2 lakh, 1 lakh, 1.5 lakh for the ओके। girls hostel as well and for the हम्म। boys hostel as well. So it is ओके। around that, so which keeps on revising. So the recent data can be found on the website. ओके। सो आप Yeah. हॉस्टल में हैं या आप मतलब पीजीज में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं? हाँ नहीं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जो कॉलेज है विच हम्म। इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी. राइट। So if you see the like with all due respect, if you see the NLUs and lots of other colleges in the country, हम्म। they are situated because they have a huge campus. They have राइट। a broad campus, राइट। so they're mostly situated outside the city. हम्म। But our college is actually in the heart of the city. It's in the main city. ओके। So कोई भी student hostel में, because for the internship stuff and for so many other things also, you हम्म। can't stay in hostel. You can't always come in time.
राइट। So there are so many restrictions because हमारे कॉलेज में इवेंट्स भी होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन भी होते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों में लेट हो जाता है. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ज़्यादा हॉस्टल में नहीं रहता. और क्योंकि पीजीज और फ्लैट्स इजीली अवेलेबल हैं बिकॉज इट इज इन द सिटी. सो राइट। मोस्टली पीपल सो आई ऑल्सो स्टे इन अ फ्लैट सेल्फ. ओके। या ओके। सो हॉस्टल के साथ साथ फीस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर कैसा है बीवीपी का? बीवीपी का जो फी स्ट्रक्चर है विच इज इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, तो उसके कंपैरिजन में इट्स वेरी अफोर्डेबल. ओके। When I took admission, it keeps on revising with 5% every year. So when I took admission 2019, it was around 78,000. ओके। Currently, it is 86,000 for unaided seats. But ओके। we do also have in BA, we have two courses for 5 years. So BA and BB LLB. So all the BBA LLB seats are unaided seats. So we have to pay around 86,000 currently. But for BLLBC, there are, I think, around 50% or 40% seats are aided seats. So ओके। those aided seats are उनकी fee structure और काफी ज़्यादा affordable है, which is around 40,000 currently, 36,000 ओके। or 38,000 ओके। currently. So yeah, so that is basically this fee structure. ओके। जैसे पुणे Yeah. में और भी कॉलेजेस हैं लॉ के लिए, जैसे कि आईएलएस पुणे हो गया एंड सिम्बायोसिस हो गया, तो अगर उनसे अपन फीस कंपेयर करें तो वी कैन से कि सबसे ज़्यादा अपन सिम्बायोसिस की फीस मानते हैं, देन अपन बीवीपी को कंसिडर कर सकते हैं एंड देन उससे कम फीस आईएलएस की आती है, राइट? Right. ओके। So yeah. ओके। सो इसके बाद बीवीपी का एंट्रेंस कैसा है, एडमिशन प्रोसेस एंड कितनी सीट्स ऑफर्ड हैं बीवीपी में लॉ के लिए? So बीवीपी में अराउंड 120 प्लस सीट्स होती हैं फॉर बीबीएलएलबी एंड ओके। 120 प्लस सीट्स होती हैं फॉर बीएलएलबी एज वेल. ओके। तो प्लस क्या होता है कि बीवीपी के जो एग्जाम्स होते हैं दीज आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मे या ओके। इन द बिगनिंग ऑफ द जून अराउंड. So by that time, most of the law intensives are anyway done. राइट। एंड एमएससीटी के रिजल्ट भी आ रहे होते हैं. तो उस टाइम पे बहुत से बच्चे जो होते हैं जो एमएससीटी के लिए वेट कर रहे होते हैं who also take admission in BVP, then they go up to and then they get some good college in MSCT, either ILS or GLC, like which is the top ओके। preferential colleges. So they go for it. So anyways, like 150 to 150 plus seats, 120 plus seats are there currently, and they keep on revising it. So every year it keeps on ओके। revising depending upon the ओके। number of vacancies. ओके। एंड एंट्रेंस एग्जाम कैसा है इसका? Entrance exam is actually Bharti Vidyapeeth is has always have been a motto. It always had a motto, kind of to give opportunities to everyone. So the exam procedure it is not very hectic, it's not very tough for something कि जहाँ पे बिल्कुल creamy layer की आ सकते हैं. It's very moderate. It is very decent and it follows the basic pattern which is followed by almost all law exams, law intensive exams, just like that. ओके। एंड व्हाट अबाउट द कोर मैनेजमेंट ऑफ बीवीपी? So core management, we currently have an in-charge principal, Dr. Vijala Bindare ma'am, and for BBA we have Dr. Vidya Dere ma'am. She's our HOD, and similarly BA and BBA we have different teachers. We have currently our college has lots of committees and committees as well, which are headed by our teachers. ओके। And so we have Shivangi ma'am, we have Karishma Patil ma'am. All these teachers are there, and ओके। they actually handle, especially in the senior years when we come into third year or fourth year. These are the people we interact with. इन्हीं लोग से we have to. They are very helpful as well. They are very easily accessible. They are helpful. So this is how the core management works. ओके। एंड एनी ऑफ देम जो आपकी फेवरेट हो? Well, currently because हम ये सारे टीचर्स में से शिवांगी मैम ने हमें कंपनी लॉ पढ़ाया था लास्ट सेमेस्टर. So of course, because she was very helpful, she was very. But we also have a lot of visiting faculties. So lots of visiting faculties are also helpful. So it's not like anybody's favorite or something. ओके। But yeah, the best part of our college is, to be very honest, is that all teachers are very easily accessible, and they're very helpful in anything, which is not case in lot of other law colleges because the senior professors are very senior.
so they don't Right. usually have time, Hmm. to interact with the students and to help them for Hmm. anything. But in our college, that is not the case. So teachers are like that only. So it's like Okay. I can't keep that. I still have to study for another year. ओके ओके। तो जैसे बीबीए एलएलबी एंड बीए एलएलबी तो है बीवीपी में लॉ के लिए, एंड और कौन से कोर्सेज हैं बीवीपी में लॉ के रिगार्डिंग? So we have LLB 3 years का, हम्म। LLM भी है, हम्म। और our college also provides the diploma courses and postgraduate diplomas as well. हम्म। So all these courses are currently there. ओके। ओके, एंड अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है बीवीपी में, एज आप साथ में सीएस भी परस्यू कर रहे हैं, राइट? सो Right, right. अटेंडेंस तो आपको बहुत मैनेज करके चलनी पड़ती होगी, बिकॉज सीएस में भी बहुत टाइम देना है एंड लॉ में भी बहुत टाइम देना पड़ता है। सो कैसा क्या है अटेंडेंस का बीवीपी में? हाँ. So attendance की जो basic criteria which is from जो Bar Council of India नहीं दी हुई है हम्म। 78%, so nobody can defy that, क्योंकि हम्म। that is the basic criteria, you have to do it anyway. राइट। So our teachers actually they want हम्म। कि हम कॉलेज आए, ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें, ताकि हम वो अपनी 78% वाली क्राइटेरिया भी फुलफिल हम्म। कर सकें. हम्म। बट as I seen, I have friends in few other colleges. तो वहाँ पे क्या होता है कि they are very strict about it. You ओके। can't do anything. But हम्म। in our college, there, if there are any genuine reasons, if there are any हम्म। genuine medical grounds, or if you were interning also in a period, जबकि it was genuinely you have not interned previously and you got an internship only in that month, you are not able to get internship in any other month. So ओके। उन सारे times में teachers are also very helpful. So they give you the option. So they help you. सपोज इफ यू, अगर किसी वजह से आपका किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आपके अटेंडेंस में थोड़ी सी इशू हो गई है, सो यू कैन cope it up with assignments, and so teachers help you with that. So ओके। criteria 78% ही है, which is a BCI criteria, but ओके। teachers are helping. So in case if you, for any, so like मेरे केस में CS executive की वजह से if I had to give exams, so हम्म। I had to give my executive exams in December. So for ओके। that reason I couldn't do internship in December. ओके। So I did my internship in January. So during that राइट। January period, when my attendance shorted a bit, हम्म। so I talked to my teacher. I told them that I was generally doing internship and stuff. So हम्म। they understood it and they took it, ओके। as a positive criteria. So teachers help you with that. ओके, मतलब अटेंडेंस मैंडेटरी है, बट अगर कोई आपके पास रीजन है एंड दैट इज अ Yeah, डेफिनेट रीजन, तो दे right. कंसिडर इट, राइट? They consider it. They consider it. ओके। Definitely. ओके, एंड Yeah. बीवीपी में कौन से सेल्स एंड कमिटीज हैं, एंड आप कौन से सेल्स एंड कमिटीज का पार्ट हैं? So, मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था, तो आई वाज हम्म। पार्ट ऑफ, बिकॉज आई वाज वेरी enthusiastic, I was very excited for it. हम्म। So I was part of the cultural committee. I was also part of the ओके। moot court committee for some हम्म। time. I and हमारा कॉलेज सुराना एंड सुराना भी होस्ट करा रहा था उस टाइम पे, हम्म। फर्स्ट ईयर में. सो इस साल उन्होंने पीएन भगवती होस्ट कराया है. So we have actively working moot court committee and moot हम्म। court society, and also ओके। we have a cultural committee. In cultural committee we conduct fest every year. हम्म। So that is one thing. And apart from that, we have a one, I think ऐसी committee मैंने बहुत कम colleges में देखी है. We हम्म। have a actively working madhyasthata, which is the ADR committee. ओके। So which is yeah. So it's this arbitration and everything, is people are getting too much interested into arbitration these days. So हम्म। we have a working committee of madhyasthata. So yeah, these are like 4 5 committees which are actually actively working in our college currently. ओके। ओके, एंड बीवीपी की इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स कैसी हैं? मतलब एज इन कोई डेटा अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग देयर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स, तो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं आपको कॉलेज वाले? Basically, I think the data के हिसाब से, I think website पे they have a list of students who हम्म। got placed, because हम्म। placement was got actually थोड़ा सा affect हुआ है after COVID-19 के बाद से. ओके। But our college is still providing facility. We have Bajaj और ऐसी कार और हम्म। कंपनियां who are mostly into compliance. हम्म। Currently, I agree, there are not lot like big law firms like Sam Cam, ऐसी firms अभी नहीं आ रही हैं currently. ओके। But our principal and our placement cell, हम्म। the faculty who is in charge of placement cell, and our principal, they're actually striving कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आए. So I'm sure कि आने वाले 1 2 3 सालों में हम्म। ये सब चीजें भी होने लगेंगी. But ओके। currently they have a decent placement, हम्म। which is currently because COVID-19 के बाद से थोड़ा सा affected हुआ है. हम्म। But राइट। otherwise we have a decent placement.
ओके। एंड एक कोई एवरेज पैकेज कि इतना पैकेज जाता है अगर प्लेसमेंट मिल रही है बच्चे को बीवीपी में से, तो एनी एवरेज? तो एज फार एज द डेटा मैंने देखा था जो पहले का और हम्म। करेंटली, क्योंकि मेरे सीनियर्स वर मोस्टली द कोविड 19 बैच, तो उनके साथ कोई इशू हो गया तो उनमें से हार्डली एनीबडी गॉट एनी प्लेसमेंट. हम्म। They got placement, but that was after, when they came after COVID-19 or something. हम्म। So, but the average package stays between 5 lakh to 7 lakh. So हम्म। that is currently an average package. Yeah. ओके। एंड एज बीवीपी पुणे में है तो ज़्यादा इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स की ऐसे भी दिक्कत नहीं आती होगी, बच्चे को इजीली अवेलेबल हाँ, रहती होंगी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स भी, हाँ, राइट? हाँ. जैसे मेरा एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया था कॉलेज ज्वाइन करने का, हम्म। कि मैं कि ये पुणे में है, तो पुणे हाँ। में कॉलेज होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पुणे में ही एक्सेसिबल रह सकते हो, और मुंबई इज ऑल्सो एक्सेसिबल टू यू. राइट। So Mumbai is like hardly 2-3 hours away from here. So हम्म। you can do internship there. You can also go and stay there for a month or so and can do internship then come back when college is done. So पुणे में रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है. एंड प्लस एक्चुअली हमारे कॉलेज का जो कैंपस है दैट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी. तो राइट। इट्स नॉट लाइक कि शहर से कोई बहुत दूर है हम्म। और आपको बहुत सारे ट्रेन बदल के बस बदल के फिर आपको आना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है. So it's very easy. It's very accessible. हम्म। We have also all the firms and big companies are here in Shivaji Nagar, so which is very close to Kothur. ओके। So that is very accessible. So इस चीज का actually this is one of the biggest benefits of studying in Bharti Vidyapeeth Pune New Law College. Yeah. ओके। सो अगर बच्चा बीवीपी कंसिडर कर रहा है एज अ कॉलेज, तो ऐसी कौन से पॉइंट्स है जिसके कारण बच्चा शुड सिलेक्ट बीवीपी, कि ये पॉइंट्स हैं जो बीवीपी में ही मिलेंगे बच्चे को? तो मैं अपने हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ हम्म। कि पहला जो मेरा एक बहुत प्राइमरी रीजन था, बिकॉज आई हम्म। डू नॉट कम फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली साउंड फैमिली. ओके। So the first criteria was the fees criteria. Because आप हम्म। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो it is the fees is way too much for हम्म। anybody to afford. So that is one thing you can consider. Plus अगर आपको कम फीस में एक अच्छे शहर में रहने के लिए मिल रहा है और आपके लिए चीजें, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो वही है, अगर आप भारतीय विद्यापीठ में पढ़ रहे हो तो आप हम्म। सिम्बायोसिस में जाके इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, सिम्बायोसिस में जाके लेक्चर्स ले सकते हो, राइट। सिम्बायोसिस के भी कोर्सेज कर सकते हो. हम्म। आप मुंबई के कॉलेजेस में भी एक्सेसिबल है आपके लिए. राइट। सो एक जो प्लेस है, फर्स्ट थिंग इज फीस, सेकेंड थिंग इज द प्लेस थिंग, कि आप हम्म। कब काफी अच्छी उसमें है. The राइट। third thing is if you genuinely want to study, you don't हम्म। want to come college just for the sake of college. If you हम्म। genuinely want to study, so we have a great faculty at college. ओके। Our हम्म। teachers actually put effort on every student, which I've heard and I know that which is not the case in almost all the colleges in the country. Because हम्म। the professors are very senior. So राइट। स्टूडेंट्स उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी वो अपने डेट्स और कोर्ट डेट्स की वजह से वो कॉलेज नहीं आ पाते हैं. हम्म। तो ये सब चीज होती है, ये चीजें हमारे कॉलेज में नहीं है. हमारे कॉलेज में ओके। रेगुलरली लेक्चर्स करते हैं, हमारे टीचर्स जनरली एफर्ट देते हैं. So if you genuinely want to study, then this is one thing. So these are basically three criteria which I believe should any student should consider, because इसके बाद it is mostly your effort as well, how much हम्म। effort you are putting in college. Because even if you study in even if you go to study in Harvard, but if हम्म। you're not putting any effort out of yourself, you won't be able to take out anything. So राइट। that is one thing. But yeah, these three criteria are something which I believe हम्म। any student should consider of for studying in Bharati Vidyapeeth Pune. ओके। तो पुणे में रहने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एज हमने आईएलएस के टाइम पे डिस्कस किया था कि पुणे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो आपको क्या क्या हाँ. बेनिफिट्स मिले पुणे में रहने के? जैसे मैंने आपको बताया कि पुणे में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि पुणे मुंबई से पास है. सारे हम्म। बिग लॉ फर्म, सारे बिग कंपनीज मुंबई में है. हम्म। पुणे में भी कई सारे लॉ फर्म्स है, कई सारी कंपनीज हैं यहाँ पे भी. काफी सारे, क्योंकि आईएलएस काफी पुराना कॉलेज है. तो हम्म। आईएलएस के भी काफी सारे एलुमनाइज हैं जो कि यहाँ पे दे हैव ऑफिसेज, दे हैव फर्म्स, दे हैव चेम्बर्स. हम्म। एंड ऑलमोस्ट अभी तो आई थिंक एलकेएस स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक. एलकेएस इज अ लॉ फर्म व्हिच स्टार्टेड आई थिंक 2-3 years बैक. ओके। एजीबी का ऑफिस हमारे पुणे में ही है. So I believe Pune and Pune is actually it's a student hub हम्म। for especially for Maharashtrian students. But so महाराष्ट्र के में यहाँ पे सारे बच्चे नागपुर, नासिक अराउंड जो महाराष्ट्र के हम्म। आसपास के एरिया के हैं, वो सारे बच्चे पुणे ही पढ़ने आते हैं. तो पुणे इज पुणे। एनीवे स्टूडेंट हब. So you get to राइट। learn a lot, you get to see a lot, and the Pune हम्म। student culture is there. So वो एक चीज है.
एंड व्हाट आर यू एस्पायरिंग टू बी इन फ्यूचर, लाइक आपको लॉ में कंटिन्यू करना है, जुडिशरी में जाना है, एंड हाउ इज बीवीपी हेल्पिंग यू इन दैट? So as I said, I was doing my internships and I'm also doing CS executive. So मेरा interest corporate and media entertainment laws में है, and ओके। I've done internship in that also. हम्म। Recently I've also figured out कि मेरा interest commercial litigation में भी काफी अच्छा है, and मेरे पास उसके भी experiences हैं. So हम्म। I have currently kept open because it's my final year. So I'm going to be in my final year. तो अगले एक साल में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई गेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स आई गेट, हम्म। I would definitely choose a path कि मुझे exactly क्या करना है. But ओके। these two things like corporate and media and the commercial litigation is something which I'm actually striving towards. कॉलेज की तरफ से हेल्प ये है कि कॉलेज लाइक अभी मेरा सेवेंथ आई एम गोइंग आई हैव माय एग्जाम्स इन 2 days of each semester. ओके। So ओके। we have all the important law subjects, including company law, CRPC, CPC, limitation, evidence. All these important law subjects are there in seventh and eighth semester, including mergers ओके। and acquisition and competition law. All these important law subjects are in seventh and eighth semester. So this is the time when you actually have to go out and intern with law firms and chambers and stuff. सो इस टाइम पे हमारे कॉलेज का जो करिकुलम है वो बहुत हेक्टिक करिकुलम नहीं है कि आप ओके। सिर्फ कॉलेज में पढ़ते ही रह जाओ, आप कुछ और बाहर की चीजें सीख ना पाओ या आप कहीं और बाहर कुछ करना पाओ, ऐसा नहीं है. हम्म। हमारे कॉलेज का करिकुलम काफी मॉडरेट करिकुलम है और इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड. तो जो सेवेंथ और एट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करते हैं आपकी आने वाली इंटर्नशिप में. सो ओके। हमारे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट्स हैं. तो ये थर्ड ईयर से लेके फोर्थ ईयर का जो टाइम है जब आप एक्चुअली लर्न करना स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे ये सारे सब्जेक्ट्स आपको काफी हेल्पफुल होते हैं. प्लस आई टोल्ड यू अबाउट द टीचर्स. तो टीचर्स आर एनीवे वेरी हेल्पफुल एंड दे सपोर्ट यू फॉर एनीथिंग. सो दे आर इजीली एक्सेसिबल फॉर इफ अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है, यू कैन टॉक टू देम एंड उनके लेक्चर जब खत्म होते हैं तो उसके बाद यू कैन गो सिट विद देम एंड अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट एनीथिंग विद देम. तो ऑल दीज थिंग्स कॉलेज हेल्प्स अ लॉट. तो ये सारी चीजें इंटर्नशिप में बहुत हेल्पफुल करती है, मतलब काफी हेल्प करती है, बहुत आगे हेल्पफुल ओके। ओके। थैंक यू है. सो मच अथर फॉर योर रिव्यूज। आई होप आपके रिव्यूज स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। Thank you so much, Karthik. It was great थैंक talking यू। to you. I hope it's helpful to everyone as well. या। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Thank you so much. You too. Bye. बाय।